ओके, पहले तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बचे जो हमारा एरर था, पहले तो क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। द क्वेश्चन इज मोर वाटर इज ग्रेजुअली एडेड, मतलब the height of the level in a beaker increases so that the depth is in figure 3.1 gradually increases. The length x is continuously adjusted so that the system remains in equilibrium. On figure 3.2, sketch the variation of x with h. मतलब हमने we have to plot the graph of x and h. Use the space below for the working. So we know that the above equation is what? ये वाली इक्वेशन हमने दोबारा लिखी है मैंने कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सो आवाज आ रही है आपको? ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज 2.6 into initially it is 0.4. अब इसको हमने लिख दिया है because we have to make a relation or equation between x and h. So 2.6 into x, याद है? ठीक है, 2.6 into x. Now on the other side the force is up thrust. ये देखें यहाँ पे up thrust माइनस up thrust एक फोर्स लग रही है माइनस ये हमारे पास क्या होगा, रो जी वी। रो जी वी आपके पास टोटल अप थ्रस्ट होती है ना। so this this is just upward force. So the force is F. This one is total F from 4 to 1.4 10 power minus 4. अब बच्चे यहाँ पे देखें, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि एक हमारे पास फोर्स लग रही थी 4 माइनस अप थ्रस्ट, ऐसे लिख देता हूँ 4 माइनस अप थ्रस्ट. Now up thrust is rho gv, so this is rho gv, and we know that volume is area into height. ठीक है, अब बचे बस ये आपने ऐसे एज इट इज लिखना था. हमसे मिस्टेक हो रही थी, वी मल्टीप्लाई एच विद 4 एज वेल, 4 से मल्टीप्लाई नहीं. तो अब जरा देखें, दिस 2.6 will be divided with the both terms. So 4 divided by 2.6 करें, 4 divided by 2.6, 1.538, जिसको मैंने लिख दिया था 1.4. ठीक है, एंड इसको मल्टीप्लाई करें 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.4 10 पावर माइनस 3, मल्टीप्लाई करें. जी ये देखें, ये मैंने लिखा था 13.734. Now 2.6 will be divided with both terms. इसी 13.734 को 2.6 से डिवाइड कर दें. हाँ जी, so this is the equation that gives the relation between x and the h. क्लियर है? अब बच्चे, अगर हमारे पास if given क्या था, when h is 0.1 then x is 0.4, it is already given. ठीक है, now if the x is 0, if the x is 0 में लेट कर लेता हूं, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 0 लगा दें और इसको रीअरेंज करेंगे ना, सो h इक्वल्स
1.54 divided by 5.28. So the answer is so 1.54 divided by 5.28. तो आंसर क्या आएगा 0.29. तो अब बचे the first point is already given in a question that when x is when h is 0.1, then x is this one is already given. और बचे यहाँ पे हमने क्या किया कि if I use x equals 0, then the value of h is 0.29. So 0.29 is this. Now you have to join these 2 points by a straight line because this is the equation of straight line. Any confusion? बस थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी. ये है आपका क्वेश्चन. जी बच्चे पढ़े. Mhm. So here we have a pendulum. Initially the pendulum is at point x. Now you displace the pendulum from x to y. The height, there is a change in the height of the ball and the change in height is h. आगे. Mhm. जी. Yes. So you have to show the. So here we have a pendulum. Pendulum is moving from x to y through here to height h. Next is on figure 3.1. Draw a solid line to represent the displacement of the center of sphere at position y from position x. So displacement क्या होता है? The shortest distance. तो हम क्या करते हैं? We have to draw a straight line from x to y. So this one, the green line representing the displacement. Okay. Now show that the mass of the sphere is this. How can we show that the mass of the sphere? How many things are given? The kinetic energy. Kinetic energy is given. Momentum is given. Kinetic energy का एक फॉर्मूला लिखें. Kinetic energy is half mv square or kinetic energy is also equals to p square over 2m. This is the formula of kinetic energy in term of momentum and mass. तो मुझे यहाँ से mass हमने find करना है. So mass will be equals to p square over 2 into kinetic energy. P square 0.72 square divided by 2 into the kinetic energy. The kinetic energy is 0.86. चेक करें क्या होता है. Hmm. 0.30 kg.
Next is calculate the height. This height, ये आपने फाइंड करनी है। जी बच्चा। हम्म, या हम ऐसे करते हैं। लॉस इन काइनेटिक इक्वल्स, हाँ वो लगाते हैं। लॉस इन काइनेटिक इक्वल्स गेन in potential, gain in potential energy. So the loss in kinetic is already given, which is 0.86, and change in the potential energy is mgh. Now we have to find h. So 0.86 divided by the mass is 0.3 multiplied by 9.81. 0.3 multiplied by 9.81. अब चेक करें क्या आता है आंसर। 0.29. So 0.29 meter is the height. Next is the distance between point P and the center of the sphere is 0.93. When the sphere is at position Y, the string is at an angle theta to the vertical. Show that theta is 47 degree. Okay. आपको हाइट भी गिवन है, क्या यूज करें इसमें? यू हैव टू फाइंड थीटा। अगर मैं इधर बनाता हूँ, this one is the midpoint. The ball is now at here, और और क्या कर सकते हैं? And this one is the displacement. यहाँ से this one is 0.93 टोटल वन, और इसमें से 0.93 में से हाइट को माइनस कर दें। 0.93 माइनस हाइट, हाइट क्या आई थी हमारी? 0.29. सो जो हम माइनस करेंगे, you will get this height, this length, which is 0.64. Okay, now this one is the theta. और क्या कर सकते हैं इसमें? थीटा अगर मैं cos थीटा लगाता हूँ 90 का एंगल का, 90 तो ये होगा ना? Is it 90? This one is 90. Okay, यहाँ पे मैं इसको लाइन को आपको स्ट्रेट करके देता हूँ। इसी पिक्चर में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा नजर आएगा। We have to draw a straight line. तो ये एंगल जो है, this one is 90 degree. Okay, and opposite to the 90 is the hypotenuse. Sorry, base. Base क्या होती है? Base is 0.6. 0.6
64 over opposite to 90 is hypotenuse, na? So 0.93 theta equals cos inverse 0.64 0.93. चेक करें, इसका आंसर भी एक बार चेक करें. ठीक है, 46.5 which is 40/70. cos थीटा हमने लगाया 0 पॉइंट क्या था 0.64 over 0.29. Okay, next is for the sphere at position y, calculate the moment of its weight about point P. Moment at point y. So the weight is acting downward. The weight of the bob is acting vertically downward. Now we have to split the weight into their perpendicular components. The one component is this one, which is mg cos theta, and this one is the mg sin theta, and in moment we have to take a perpendicular component from the pivot. So mg sin theta is perpendicular with the pivot. तो हम लिखते हैं moment equals f into the perpendicular distance from the pivot, and in this case the force equals weight and the perpendicular distance होगा ना. तो यहाँ पे mg हाँ ठीक है, we have to take mg sin theta, perpendicular component of the force, and the distance is 0.93. So m is the mass, which is mass कितना है 0.3 0.30 into 9.81 into sine कितना आया था 47. Why we take mg sin theta? Because in moment we have to take the perpendicular components of force and the distance, and this is 0.93. check करें 2.15 2.2 ही लिख देते हैं 2.15. this is 2.0. आंसर क्या है 2.15 2.2 भी हो सकता है. Okay, next is state and explain whether the sphere is in equilibrium when it is stationary at point y. कहते हैं कि y पे वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. नो देखिए इस पे रिजल्टेंट फोर्स तो लग रही है ना mg sin theta at point y. Okay, mg cos theta will be balanced with the tension, but still we have a one component of the weight which is mc sin theta. तो हम कहेंगे not in equilibrium because the resultant force it is there is a resultant force at y, that is
mg sine theta. So it is not in equilibrium. इसके तो बहुत क्वेश्चन है 25 पहले पेजेस थे पहले कितने पेजेस थे 28 still we have 25 pages okay next question number 22 जी बच्चे पढ़े क्वेश्चन 22 hmm. So how many things we have the weight of the cylinder is given height h and cross sectional area of the diameter height is the h and cross sectional area of the diameter okay diameter is given the density of the water density is given the difference between the pressure difference is given you have to find the h pressure due to liquid ना लगा दें pressure due to liquid क्या होता है delta p equals rho g h now pressure difference at the top and the bottom face of the surfaces of the cylinder density is 1.010 raised to power 3 G is 9.81. The height is h and okay, pressure difference is given. Pressure difference is 520. Check out. H equals 0.053. 0.053 meters. Show that the upthrust acting on the cylinder is this. Upthrust is this. What is the formula of upthrust? Rho GB. अपथ्रस्ट के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं rho gv okay upthrust equals rho gv upthrust acting on the cylinder is this okay. rho g rho and g is given वॉल्यूम की जगह अगर हम लगा देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट है ना एरिया एरिया कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हाँ area of cylinder is pi r square h. Okay. No, pi r square h is the volume of cylinder. अगर हम डायरेक्ट वॉल्यूम ही लगाते हैं चलिए करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक दफा चेक करें गूगल पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच ही होता है ना पाई रेडियस इज
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये चेक करें क्या होता है वॉल्यूम। ओवरऑल आंसर 4 multiplied by 10 raised to power 5 minus 5. Okay, this one is the volume. तो अगर हम लिखते हैं rho is the density which is 1.0 10 power 3, g is 9.81 और ये भी आपने बताया है 4 10 raised to power minus 5. आंसर चेक करेंगे आप इसका। पॉजिटिव 3। ओ आंसर तो 0.39 आना चाहिए। आ गया 0.3924 which is 0.39 आ गया। Okay, so next is calculate the tension in the string. You have to find the tension, so we have to check how many forces are acting. One is the tension is upward, weight is downward, upthrust is also upward. So there are two forces upward. So weight equals tension plus upthrust. So tension equals weight minus upthrust. So tension equals weight. Weight I think given here 0.84. Upthrust is not, it's very simple. 0.84 minus 0.39. Check करें। 0.40, 0.45. 0.45 is the tension in a string. Next is the string is now used to move the cylinder in a vertical upward through the water. The variation with time t of the velocity v of the cylinder is given. This is the velocity of the cylinder when it is moving upward. Use figure 2.2 to determine the acceleration of the cylinder at time t equals 2 seconds. So you know that the gradient of the graph will give you the acceleration. तो मुझे मैं ये वाला पॉइंट ही ले लेता हूँ 10 minus y2 minus y1
x2 माइनस x1 समझ आइए इसकी 4 मीटर पर सेकेंड ओ गलती हो गई है velocity is in centimeter so 10 raised to power minus 2 तो आंसर वही आ जाएगा 4 10 raised to power minus 2 not just 4 so 4.0 into 10 raised to power minus 2. Next is the top face of the cylinder is at depth of 0.3 meter below the surface of the water at time t equals 0. Use figure 2.2 to determine the depth. Depth mean h ही आप कह देंगे of the top face of the top face below the surface of the water at time t equals 4 second. इसमें हमारे पास क्या है the top face of the cylinder is at depth 0.32 और हमने फाइंड क्या करना है यूजिंग यूज फिगर 2.2 फिगर को यूज करना है तो उसका मतलब है एरिया अंडर द ग्राफ लेना होगा इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ तो इसके लिए हम लिखते हैं एरिया अंडर द ग्राफ तो डेप्थ या हाइट इक्वल्स एरिया अंडर द ग्राफ बी डी graph and this is the shape of it's not a shape of trapezium no? It's a triangle so triangle is हम ऐसे करते हैं 1/2 base into height लग जाएगा ना इस पे so 1/2 the base is 4 height is 10 10 10 into 10 raised to power minus 2 check करें 0.20 meter okay this is the total area अब कहते हैं the top face of the cylinder is at this much depth इतनी डेप्थ पर है so therefore 0.32 minus 0.20 उसमें से इसको माइनस कर देंगे ना इतनी तो ऑलरेडी हाइट पर था ठीक है ऑलरेडी the top face of the cylinder is at depth 0.32 below the surface of the water at time t equals 0 ऑलरेडी वो इस हाइट पे था बचे now 2 determine the top face below the surface of water at time 4 second मतलब after this 0 second पे already the depth is 0.3 so 0.32 minus 0.2 कर दो 0.12 इसका आंसर देखें The answer is 0.45 नहीं वो तो ऊपर वाले का था टेंशन का this B part ठीक है चलो थर्ड पार्ट पढ़े सी पार्ट पढ़े बच्चों So which force is acting when the object is moving and
is not acting when the object is at rest in a fluid. The drag force, है ना? Drag force. Next is state and explain the variation, if any, of the acceleration of the cylinder as it falls downward through the water. तो बच्चे अब वो नीचे की तरफ आ रहा है. This one is the cylinder and it is moving downward. So weight is acting downward and up the drag force is upward. So the net force is upthrust. Upthrust is also upward. So weight plus drag force. ठीक है. और इसकी स्पीड क्या हो रही है? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? State and explain the variation, if any, of the acceleration of the cylinder as it falls downward through the water. जी बच्चे, स्पीड तो इसकी इंक्रीज हो रही है ना. इसमें यही लग सकता है ना फोर्स. या अगर हम चेक करें the net force, the resultant force will be weight minus upthrust plus drag. Huh? Now, drag force is proportional to the speed. So, if the speed increases, drag force increases, and if the drag force increases, the resultant force will decrease. That decreases the acceleration. इसका आंसर देखेंगे कि acceleration decrease हो रहा है. I think acceleration has to decrease. हाँ, तो हम लिखते हैं the speed drag force. तो इसमें हम लिखते हैं कि the speed of cylinder increases, that increases the drag force, that increases the drag force. ठीक है. Therefore the resultant force, therefore the resultant force also decreases, that decreases the acceleration. Any confusion now? Next question. ये तो बहुत लगती है. बहुत छोटा सा है. ये कर लेते हैं. बड़े बच्चे. Okay.
show that the component of the weight that is perpendicular to the plank is, और मैंने आपको बताया हुआ है शॉर्टकट क्या होता है, the component of the weight which is साइन होता है ना, which is perpendicular to the plank is 59. ओके तो अगर हम इसके कम, ओके तो इसको हम करते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा, द वेट इज 96 साइन 38 डिग्री. सो ये आसान है, चेक करें. $59 Newton. Okay. By taking moment about and A of the plank, calculate the tension. Tension is clockwise moment equals anti-clockwise moment. So clockwise moment is due to, किसको उन्होंने पिवट लिया था, the point A is act as a pivot. ठीक है, this one is the fixed point. So clockwise moment is due to 45. This creates a clockwise moment. So 45 and its distance from the pivot is what? 1.1 plus 0.3 plus 1.5. कितना आता है? 5, 6, 7, 8, something 2.9. Yes, 2.9. So next is, so clockwise moment is due to 45 and its distance from the pivot is 2.9. Now move to the anti-clockwise moment. Anti-clockwise moment is due to what? हाँ, tension and due to the weight. तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे anti-clockwise moment is 59. We have to take the perpendicular component of the weight 59 and its distance from the pivot 59 say 1.5, 1.50 plus the other side is the distance is what, 1.5 plus 0.3 कितना हो जाएगा, 1.8. हाँ, so tension into 1.80 because tension and weight creates a anti-clock. This is weight, this one is the tension and this one is the force. अब चेक कर लें क्या आता है आंसर. 45 into 2.9 करेंगे आप, माइनस 5 करेंगे डिवाइडेड बाय 1.80 क्या है, 22.23. So 23.333. So 23 is the tension. काफी है. Okay. The office